Hatha Yoga. What exactly Hatha Yoga actually is has not changed for thousands of years. Hatha Yoga is about balancing the body and mind. Ha represents the sun and Tha the moon. The practice of Hatha Yoga aims to join these two energies. Generally, people think of Hatha Yoga only as asana practice, but it is the practice of asana, pranayama, shatkriya, mudra, bandh, dharana, and dhyan to achieve the sublime state of samadhi. अर्ली 10th सेंचुरी, यदि हम शुरुआत की बात करें 10th सेंचुरी की, तो मच्छेंद्र नाथ was a saint and yogi who is traditionally considered the founder of Hatha Yoga. मच्छेंद्र नाथ जी एक योगी हुए हैं जिनको फाउंडर ऑफ हठ योग भी कहा जाता है. मच्छेंद्र नाथ was the guru of Gorakhnath. He is also the founder of Nath Sampradaya, having received the teaching from Shiva. 11th and 12th century, Gorakhnath, the real gems of Nath Parampara, has been the Nathis, who are 9 in number. They are known as Navnathas. Guru Gorakhnath was one of the prime Naths in this tradition. His followers are known as Gorakhnathis or कनफटा योगीज. 15th सेंचुरी, अगर बात करें 15वीं शताब्दी के आसपास की, हठ योग प्रदीपिका was written in 15th century by स्वामी स्वात्माराम. हठ योग प्रदीपिका नामक पुस्तक जो लिखी गई 15वीं शताब्दी में स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा. हठ योग प्रदीपिका is the oldest surviving manual of Hatha Yoga and one of the three most important texts about the discipline. The other two texts are Gheranda Samhita and Shiv Samhita. In Hatha Yoga Pradipika, there are 4 chapters which contains 390 shlokas. हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं जिसमें 390 श्लोक या छंद लिखे गए हैं. The first chapter has 67 verses and it is about आसन. यदि पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें 67 छंद हैं जिसमें आसनों की बात की गई है. The second chapter has 78 verses and is about षटकर्मा and प्राणायामा. दूसरे चैप्टर में 78 वर्सेस या छंद हैं जिसमें षटकर्मा और प्राणायाम के बारे में जानकारी दी गई है. द थर्ड चैप्टर कंटेन्स 130 वर्सेस एंड डिस्कस अबाउट मुद्रा एंड बंध. यदि तीसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें 130 छंद हैं जिसमें मुद्रा और बंध के बारे में जानकारी मिलती है. समाधि इज डिस्कस्ड इन चैप्टर 4 which has 114 verses. समाधि को डिस्कस किया गया है इसके चौथे भाग में, चौथे चैप्टर में, जिसमें 114 छंद हैं. Chapter 1. This chapter contains detailed information of the names of asanas, how to perform them, and what kind of diet will enhance the benefits of their practice in Hatha Yoga Pradipika. Descriptions of 15 asanas is found. Chapter 2. This chapter explains various types of pranayama and their health benefits. It also talks about the practice of Shatkarma, the 6 purification techniques that cleans the body. 8 pranayama are सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम एंड पलावनी प्राणायाम. यदि हम बात करें 6 क्रियास की तो 6 क्रियाओं में आते हैं धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति. चैप्टर 3. मुद्रा and bandhas. Explain the mudra gestures and bandhas locks.
that aids in awakening Kundalini power. Chapter 4. The chapter describes techniques that lead to enlightenment and eternal bliss.